द फोर्थ वन इज नॉट गिवन टू यू। ओके, तो आपके पास सिर्फ 3 ही है। ये एक और थर्ड सवाल था यहाँ पे, राइट द what will be the initial rate of disappearance of Cl2, but that will be a very long question. That is why I have just given you 2 things. Okay, so first thing is that you just have only you just have 3 equations, and from these 3 equations you need to get the order of reaction. Okay, chलिए please start. प्रैक्टिस किया है कि नहीं आप लोगों ने, बताइए तो। रेफर यू टेल मी। यस सर। बिना देखे किया है या फिर देख देख के किया है लास्ट क्लास का? देख देख। देख के क्या होगा? हाँ, नो सर, आई वाज प्रैक्टिसिंग द ऑर्डर। तो फिर लास्ट क्लास की भी चीजें अगर आप लोग बिना देखे नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा? अभी आप देख सवाल कीजिए।
What happened, Rifat and Nawal? Yes, Rifat, done? Doing so. Okay. Can you please tell me if you have calculated the expression for rate law? I hope you have calculated the expression for rate law, yes or no? Rifat and Nawal, tell me. Yes, sir. I'm starting the B. Please send the first one.
Okay, let me see. नवाल आपने देखिए x और y क्या लिया है और x और y की वैल्यू क्या पुट की है। आपको y कितना आ रहा है नवाल? Got जिस 2. नवाल से 2 आ रहा है। और y क्या है, किसकी पावर है? क्लोरीन की पावर है या फिर NO की पावर है? Chlorine. क्लोरीन की पावर है ना, जिस तरह से आपने लिया है। और फिर आपने आंसर में क्या लिखा है? देखिए कुछ तो गलती है वहां पे, है ना। हाँ, रिफत ये सही है, दिस इज फाइन, करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड लिया है आपने, है ना। 2/1 0.5 0.3, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपने ना कैलकुलेट सही से नहीं किया है। ओके, कैलकुलेशन सही नहीं है नवाल, आपने कुछ भी बस कट 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 करके कुछ भी लिख दिया है। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लुक एट द कैलकुलेशन यू हैव डन, 2 इज इक्वल टू 2, फिर y इज इक्वल टू 2। दैट डजंट मेक सेंस ना। उसके ऊपर आपके पास 2 टू दी पावर y है, 2 टू दी पावर y से 2 कैसे हो जाएगा? 2 टू दी पावर y ही रहेगा। प्लीज करेक्ट इट नवाल। एंड द अदर थिंग इज दैट बोथ ऑफ यू गाइस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप लोग प्लीज देख देख के लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। आप भले ही एक सवाल देख लीजिए, ठीक है, एक तरह का सवाल आपने लिया प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको नहीं आ रहा है, उसका आपने सोल्यूशन देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल जो होगा उसको खुद से किया कीजिए। सारे सवालों को देख देख के करने का क्या तुक बनता है इसमें। देखिए इट्स गोइंग टू बी लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स नाउ, है ना। मान लीजिए 6:30 से स्टार्ट होती है क्लास, 6:40 तक हमने सवाल दिया, और आपके 20 मिनट में एक सवाल बनना, आप समझ सकते हैं टाइम कितना लगेगा फिर आपके एग्जाम में। प्रैक्टिस कीजिए भाई आप लोग तो। एक क्लास पूरा आप लोग को हमने न्यूमेरिकल कराया है, एक हफ्ते आप लोग को टाइम मिला। आप लोग कम से कम वो सारे न्यूमेरिकल्स तो तुरंत होने चाहिए ना जो लास्ट टाइम कराया था आप लोग। उसमें भी आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, वो भी सही नहीं कर रहे। नवाल आपको पता चला मिस्टेक कहाँ हुई है, नहीं हुई, ये तो बताइए। Yes, sir, I got it. प्लीज सी हियर गाइस। सो द रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट k, NO टू द पावर x, chlorine to the power y.
So from the first equation, I can see that 0.60 is equal to. Actually, last time I also told you guys na that you can do these things without even writing anything, है ना? और चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 0.15 x 0.15 y. This is the first reaction. Second experiment says 1.20 is equal to k. K में आपके पास NO का 0.15 और Cl2 का 0.30 पावर y 2 हो गया. थर्ड है आपके पास 2.40 is equal to k. This is 0.30 power x and this is 0.15 to the power y. It's the third case. So you can easily say that if I'm going to take 2 and 1, I will get the value for 1. Sorry, I will get the value for y, not 1. 2 upon 1, 1.20 is equal to k 0.15 to the power x 0.30 to the power y divided by 0.60 upon k 0.15 to the power x 0.30, sorry, 0.15 to the power y. Now we can cancel these terms. Okay. And we can also cancel this one, 2. Now we are going to get 2 to the power 1 is equal to 2 to the power of y. So y will be equal to how much? 1. समझ में आ रही है बात नवाल आपको? Yes, sir. ठीक है. आपने प्रैक्टिस किया था नहीं किया था? हाँ, I did. आप लोग किया था आपने बिना देखे या देख देख के? बिना देखे. बिना देखे किया था. फिर आपके मिस्टेक कैसे हो रहे हैं? सारे सवालों को आपने प्रैक्टिस किया था? Yes, sir. We did this type of question ना? ऐसे सवाल नहीं किया था हमने. किया था एक सवाल तो कम से कम किया, 2 सवाल 3 सवाल इस तरह के किए हमने क्लासेस में, है ना? ओके, नेक्स्ट है आपके पास. अब हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं. वो 3/1, राइट? सो 3/1 में आपके पास हो जाएगा 2.4 upon 0.6 is equal to k 0.30 to the power x 0.15 to the power y upon k 0.15 0.15. This is x, this is y, can get cancelled, and this is how many za? 4 za. So 2 square is equal to, this is 2 to the power x. So you can say x is equal to 2. Okay, so the rate expression is equal to k no to the power of 2 chlorine to the power of 1. Then calculate the value of rate constant and specify its unit. First of all, unit तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं. Unit is equal to, now what is the order of the reaction? Order of reaction is equal to 3. So if order of reaction is 3, the power of L is going to be what? The power of L is going to be 2. 1 minus the order. And the same will be the power for mole, but in opposite sign. And then you are going to have second inverse. This is the unit. And what will be the rate? So rate is equal to k into the concentration of NO. I think I should take the first case, 0.15, 0.15 वाला ले लेते हैं. So rate इसमें कितना है? 0.60 ना? 0.60 is equal to 0.15 to the power of 2, 0.15 and k. So k will be equal to 0.60 divided by 0.15 का cube. Yes or no, guys? Please tell me. Yes, sir. So how much answer are you getting for this? Around Yes, 200. About 200. Okay. About 200. मतलब 200 तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है फिर आप लोगों ने. एक तो 15 चला जाएगा यहाँ पे. 15 how much? 4 right? So this will be 4 upon 5 का square.
What is 15 square? What is 15 square? 150 plus 75. 225. 4 upon 0.0025. ये सही है क्या? Sir, it's 0.0225. 0.0225 होगा. So it's coming out to be somewhere around 180. Okay, exactly it is 177.78. Okay, unit is going to be liter square, mole minus 2 and second inverse. ठीक है, यहाँ तक हमको बस ये है ना कि यहाँ तक आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यहाँ तक कोई कैलकुलेशन भी नहीं है. ओके, right, next, molecularity of reaction. Number of molecules or atoms or ions that collide in an elementary reaction, just a second, last class हमने कहा था कि क्या था, हमको एक बार देख लेने दीजिए. Collide in an elementary reaction is called as molecularity. Okay, for example, if I have A plus B giving me C, in this case I can say that one atom of A and the other atom of B, so the molecularity will be 2. Okay, molecular will be 2. So here what you need to just see, number of molecules or atoms or ions colliding to form product. Okay, colliding to form products, that's it. देखिए, ये सवाल लिखिए. Write the order and molecularity for this reaction. Order बताइएगा. What is the order for this reaction?
Yes, Nawal, what do you think? What is the order? Nawal, you don't have to calculate it. You can just see and tell. What is the order, Nawal? Tell me. 0. Yeah, very good. Correct. 0. Because the rate is equal to K into NH3 to the power 0. Then only it is equal to be what? Then only they have given the rate that is equal to K. I think we did something similar in the last class. Yes or no? Something similar in the last class. आपकी क्लास में क्या था किसी और क्लास में क्या था not in your class, I think somewhere else. It's similar type of question I have given. Okay, but what is the molecularity? How many NH3 have to collide to form N2NH2? Tell me. Yes, Nawal. How many NH3? 2. So molecularity is 2, and order is what? Order is equal to 0. So ये फर्क है molecularity और order में. Got it? Yes, sir. Okay. Also, you can see that molecularity क्या है? It is a theoretical concept. Okay. This is a theoretical concept. Right. Next, types of reaction. Okay. Now, there are two types of reaction that can occur. One is single step. There are single step reactions, and then there are multi-step reactions. There are multi-step reactions. Now, the single step reactions, these are also known as elementary reactions. Just a second. Yeah. These are what? These are also known as elementary reactions. Now, in this type, what happens? Product is formed. Product is formed in one step. Okay, product is formed in one step. For example, I have NH4, NO2. I heat this and I get N2 plus 2H2O. Okay. Now, in this case, what is the molecularity of this type of equations? It is what? It is equal to 1. Molecularity, it is equal to what? 1. Similarly, if you have 2 moles of HI, in a single step, it will get converted to H2 plus I2. Okay. And here, what is molecularity? Molecularity is equal to 2. Okay. Then you have, for example, 2 moles of NO plus 1 mole of O2 reacting, and it is going to form 2 moles of NO2. In this case, what is the molecularity? It is equal to 3. So it is known as what? Unimolecular. If the molecularity is 1, we call them unimolecular. If it is 2, we call them bimolecular. And if it is 3, we call them termolecular. Okay. And more than 3, the equations that have molecularity more than 3, it is very rare. Why? It is very rare because 4 atoms cannot touch effectively. 4 atom एक दूसरे को आपस में टच नहीं कर सकते. ठीक है, देखिए 1, 2, 3 and 4. Now you can see that these two are not touching each other. है ना? जो diagonal वाले वो एक दूसरे को touch नहीं कर रहे हैं. Okay, the only case where you can touch 4 atoms is if you have one atom like this, second atom like this, third atom like this, and then the fourth atom comes on the top like this. Now all the atoms are touching each other. But this type of orientation to form via when they are colliding, it is very difficult. Okay, that 3 come and come into one plane, and then one comes from the top. That type of reaction or collision is very rare.
That is why we don't have anything more than termomolecular. And whatever is after termomolecular, it is very rare. Now, multi-step reactions, these are known as complex reactions. These are known as complex reactions. Now, in this, product is formed. Product is formed in more than one step. In more than one step. Now, each of these steps, each of those steps are elementary. Okay, all of these are what? Elementary steps. For example, there is a reaction in which 2 moles of H2O2, it reacts and it forms 2 moles of H2O plus 1 mole of O2. Now, the mechanism for this reaction is, because it is what? It is not single step reaction, it is multi-step reaction. Okay, it takes more than one step. Now, in the first reaction, what happens? H2O2, it first itself get dissociated and it forms H2O plus 1 nascent oxygen. As you can see, for the first step of the mechanism, what is the molecularity? Molecularity is equal to 1 because we just have 1 mole of H2O2. Okay. Similarly, another mole of H2O2 will come. This reaction happens twice, H2O, and it gets 1 nascent oxygen like this. Now, this is also what? Molecularity is 1. In the second step, this was the first step. In the second step, the nascent oxygen formed via the above two reactions, they collide with each other, then they form O2. And for this case, the molecularity is equal to what? 2. The molecularity is equal to 2. Now, when you are writing the overall reaction, you can see that in overall reaction, I can cancel this nascent oxygen and nascent oxygen because it is present in the reactant this side and is present in the product in the above reactions. And we are going to get the whole equation as 2 moles of H2O2 is going to give you 2 moles of H2O, 1 and 2 moles of H2O, and 1 mole of O2 gas. Okay, 1 mole of O2 gas. So this is a reaction that happens in different multi-step, and the molecularity of all of these steps are what you can see that all of these are what? Elementary reaction, and that is why we can write the molecularity for these elementary reactions. Please write this down. रिफत एंड हनीफा रोड। रिफत देखिए आपका 5 मिनट छूटा है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है रिफत? यस सर। इंपॉर्टेंट सेगमेंट छूट गया आपका बीच में। Now, if you wrote this SNOP, tell me. Yes sir. Yes. Okay, now look for the mechanism. Okay, now mechanism comes into play, and what type of questions you will be given, please see. There is one thing that you have already learned. Write this question: determine the rate law for the following reaction. Okay, so they have given you a reaction like this. They will also give you the mechanism. Okay, if they're asking you the order of reaction. है ना, rate law आपसे अगर पूछा है ना, please ध्यान रखिएगा. If they're asking you the rate law, that means they're indirectly asking you what? The order of reaction, because without the order you cannot write the rate law. Okay, so please remember this. ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर x और y के टर्म्स में लिख के आ जाइएगा, ठीक है? प्लीज इसको ध्यान रखिएगा. Okay, let's suppose we have a benzene ring and then we have iodine group attached like this. Okay, so this is what? Benzyl halide. It is not halorine. Okay, this is what? Benzyl group, and then we have the iodine. So it is benzyl halide plus aqueous KOH, and this is going to give me benzyl alcohol. Okay, this is an alcohol. It is not phenol, it is alcohol plus Ki. Now, they will give you the mechanism like this.
I hope you all know that this is going to follow what SN1, and in SN1 it is going to be step 1. Step 1 will be what? Formation of carbocation. In formation of carbocation, we'll have this substrate, the organic substrate, and then iodine. Here, first of all, iodine will leave like this, giving a carbocation. Now, this carbocation is what? CH2 positive. Obviously, this CH2 positive is what it is? It is what? Resonance stabilized. That is why this is stable. And that is why it is also going through what? It is also going through SN1 mechanism, not SN2. This is the first step. Step 2. Step 2 will be the attack of OH negative. So we have CH2 positive plus OH negative. And this is going to attack onto the carbon atom, leading to formation of my benzyl alcohol, OH. Okay. Now, what do you think? Which one is slow? Step 1 or step 2? Please tell me. कुछ याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? बताइए कौन सा स्टेप स्लो है, फर्स्ट या सेकंड? Nawal and Rifat, please send the answer in chat. Which is slowest step? Nawal, waiting for your answer. Yes, Nawal correct. Rifat, पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है? डेली पढ़िए आप, डेली, कोई इलाज नहीं है डेली पढ़ने के अलावा. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी, हमने क्या पूछा? फास्ट पूछा या था स्लो पूछा था? नो सर, गलती से. गलती से? Yes. नहीं, 2 स्टेप है उसमें हम गलती नहीं मानेंगे, ठीक है रिफत? नहीं सर, आई. Yes, Rifat, tell me what you Yes. want. No, I was going to say step 1 and then I thought fast. Okay, so this is a slow step and this one is the fast step. Okay, this is slow because we are forming a. Why it is slow? Do you remember, Rifat? Tell me. So because of the. आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए, तेज बोला कीजिए आप. So because of the eye. No. No, it is not because of the eye. It is because from stable molecule. Yeah. This is neutral, which is stable. From neutral molecule, we are making what? A charged molecule. Okay, and obviously charge is what? More unstable than neutral, and that is why it is slow. Okay, that is why it is slow, and it is almost reversible also here. Agar ye aage ka reaction nahi hota, so it will be just reversible here. Okay, this is a slow reaction. This one is a fast reaction, and we know that the rate is determined by which step? Slow step or fast step? Tell me, guys. Rate is determined by slowest step. Okay, rate is determined by slowest step. So if I say, for example, let us say this is A, this is B, then for the above reaction, I can write the rate is equal to the rate constant K into the concentration of A to the power 1, because we have only 1. And also here you will write the molecularity of just a second. The molecularity of slowest step in a complex reaction is the, in the complex reaction is the order of reaction. Is the order of reaction. Then obviously, yes, no, please tell me. Yes, sir.
Okay. There is some differences between molecularity and order. Okay. We have seen those differences individually in order and molecularity. आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए एक टेबल बना के, ठीक है ना? Let me know if you don't understand any one of the points. It is important that you understand the difference between molecularity and order. सवाल सीधा इससे भी आ जाता है, like what are the differences? What is the difference between molecularity and order? And if I remember correctly, there was one question somewhere जिसमें आपके पास ये पूछा था, what is the difference between molecularity and the order of reaction? Raise your hand when you're done writing this. Raise your hand when you're done.
Nawaz, just waiting for you. Rifat, you can lower your hand. नवाला आप लिख रही है अभी भी? Done, sir. डन ना? अच्छा तो बताइएगा तब तो आप. I just finished. Just okay. Okay, so there is a reaction which is okay. Write some examples. The first reaction is reaction with NO2 and CO to form CO2 and NO. Okay, so and they will also give you the order of reaction. So not order of reaction, my bad. They will also give you the mechanism of reaction. Okay, the mechanism of reaction is this. Okay, so they have given you the mechanism of reaction and they will ask you what is the order of this reaction. So what you need to do is when you have been given the mechanism of reaction, then you just need to identify which one the slowest step. You got the slowest step like this, then whatever the molecularity of this slowest step is, whatever items or whatever reactant is being used in the slowest step, that is going to be your rate of reaction. So for this, rate will be equal to K into the concentration of NO2, and there are two NO2, that is why this will be equal to NO2 square, that's it. CO is not playing any part in the rate law expression. And what will be the order? Order is going to be equal to 2 for this particular thing. Okay, और complex reactions का तो ये नहीं होता, molecularity नहीं होता है. Okay, complex reactions do not have any type of molecularity. The order of reaction is going to be 2. और इस particular step का जो molecularity होगा, the molecularity for this step will be equal to also 2. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. दूसरा देंगे कर लेंगे आप लोग? Yes or no? ठीक है, आसान है ये, है ना? You just need to write the rate law expression for this. Write the second one. इसके लिए लिखिए what is going to be the rate. Rate is equal to what? इसका रेट बताइए फिर आगे बढ़ेंगे.
लिख लिया आप लोगों ने? सुनो प्लीज मी। सर 1 minute. ये सुनिए, इसका आया कि नहीं आया आप लोग? क्या होगा रेट बताइए, सेकंड वाले का रेट विल बी इक्वल टू, टेल मी, रेट विल बी इक्वल टू K into k into O5. N2O5 and power 1. very good. Please raise your hand once you are done, okay, with these questions. Write the next integrated rate law equations. Okay, now this is another topic, integrated rate law expression, which is very important. Okay, and what is the use of integrated rate law expression? See, we have got R is equal to K into concentration of A to the power 2, let us suppose, and B to the power of 1. But from this particular rate equation, we cannot determine what is going to be the amount of product after this much time, after that much time, because as the reaction is proceeding, the amount of concentration is decreasing, right? The concentration of A and the concentration of B is what? It is decreasing. And if the concentration of A and B is decreasing, the rate is changing at each particular second. Okay, so the rate is always what? It is always changing. ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा रिएक्टेंट है तो ज्यादा आपके पास रेट है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास रेट क्या थी? रेट आपकी घटते जा रही है। उसी चीज को ख्याल रखते हुए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस आर देयर that will keep in mind that this is what decreasing continuously the rate of reaction as well as the concentration of A and B, and then we will derive an equation which is going to tell you that after this much time how much of the reactant will be present, okay, or after this much time how much of the reactant will be reacted. This type of things it will be told in the integrated rate law expressions, and we will do integrated rate law expression for the zero order reaction and for the first order reaction. Okay, so first of all, write zero order reaction. Okay, so there are some things that you should know, that for this reaction, the rate is independent of concentration of the reactant. Rate is independent of concentration of reactant. ठीक है, rate is independent of concentration of reactant. That means आपके पास यहाँ पे concentration of reactant जो भी हो, rate क्या रहेगा? Constant ही रहेगा. ठीक है, so this is going to be an easy one. So let us say, for example, we have A and it is giving me product B. So for this, the rate law will be what? If it is zero order, rate law will be equal to R is equal to the rate constant K into A to the power 0. That means R will be equal to K. Okay, this is for zero order reactions only. Okay, this is for zero order reactions only. Also, one note you can write: in zero order reactions, rate is always equal to rate constant. Okay, rate is always equal to rate constant. One thing you should remember, that whenever we write the expression for rate law, then or whenever we write rate is equal to, there are two ways of writing it. First thing is that rate law can be written in two ways, or rather rate can be determined in two ways. Either you should monitor it or you should have the rate law expression. Okay, if I am going to monitor the particular reaction, or we are going to have the law, the rate law. If I'm going to monitor the rate of reaction, then rate will be equal to
then rate will be equal to minus change in the concentration of the reactant molecule divided by change in time. I'm taking D because we are going to integrate it, and it is going to be what? And it is going to be small change. Okay, small change in A divided by small change in time. Or if you have the rate law, that is rate is equal to K into A to the power 0 for zero order reaction. All of you understood both of these things? Yes or no? Please tell me. ये दोनों समझ में आया? Yes, That sir. we can determine the rate by these two different methods. Okay. Now this rate law is what? It is a theoretical method. That means you don't need to perform any experiment. If you have the rate law expression, then you can determine the rate for a particular concentration. You don't need to have any kind of experiment. So this can be done. We can determine the rate in this case without experiment. Okay, without experiment. And this requires experiment. Okay, so this will require experiment. You have to monitor the change. And both of these rate will be equal. Both of these rate will be equal. Then what I can do, I can also write this thing as minus of dA upon dt will be equal to K. Yes or no? Please tell me, guys. Can I write this? Yes, sir. Now we are going to do variable separation. That means we are going to take the dA at one side, dt at the other side. Okay, all the terms which are having A will be on the left hand side. All the terms which are having T will be on the right hand side. So this will be equal to minus D into the concentration of A will be equal to K dt, will be equal to K dt. Now we will integrate on both sides. When we integrated both sides, the negative sign will be outside like this. Integration of D into the concentration of A will be equal to K. That is a constant integration of D into T. Now integration and differentiation, you will get what? Minus A. And you will get for this KT. Okay. Minus A is equal to KT. Now please remember, whenever we do indefinite integration, that means we have not told what are the limits, right? Like limit 0 to 1 या फिर क्या है limit. So you will get a integration constant C. All of you know about this integration constant C? Yes or no? Please tell me, guys. Correct? Yes. आपको ये इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है ना कि नहीं आता इंटीग्रेशन? नवाल एंड रिफत, yes or no? Please tell me. Yes, नवाल. Not really, sir. इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं पढ़ा आप लोगों ने इंटीग्रेशन अभी तक? Sir, a bit only. इतना नहीं याद, इतना नहीं पता. जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपसे कहा जाए एक्स डी, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए आपके पास है dx, तो दिस विल बी इक्वल टू x. ये पता है आपको? नहीं. Yes. Yes, sir. ये पता है आपको, है ना? तो इतना ही किया हमने अभी तक तो, है ना? और प्लस c होगा यहाँ पे बिकॉज इट इज इनडेफिनिट. ये पता है आपको? एक कांस्टेंट आता है इफ इट इज Yes. इनडेफिनिट. ये भी पता है. अभी तक उतना ही किया ना? चलिए ठीक है, इतना आता है आप लोग, बस इतना ही चाहिए अभी तो. ठीक है. नाउ वी विल डिटरमाइन व्हाट इज दिस c. प्लीज सी c के लिए देखिए यहाँ पे, प्लीज c फॉर c. When we have integrated now, we need to find the value of this c. We will say that at time 0, at time is equal to 0, the reaction has not started. And if the reaction has not started, I will say that when the reaction has not started, I will say that the concentration of A is equal to A naught. A naught is representing what? The concentration of A at time 0. Concentration of A at time 0. So we have minus of A naught is equal to K into what is the time? 0 plus C. So K into 0 will be equal to what? 0, and you will just remain with C, and C is equal to what? Minus of A naught. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. And now, since this is a constant, what we are going to do, we are just going to plug in the value of C. Okay, substitute value of C in equation 1. This is my equation 1. Okay, now we will get minus of A is equal to KT plus minus of A naught. Now I will take this minus of A naught and I will bring it here. So this will become plus of A naught minus A is equal to KT. So this is the rate law expression for zero order reaction. ठीक है, बहुत आसान है. Very similar is the equation for the first order also. Okay, so please copy this. Let me know if I have to zoom out a bit more.
or scroll up. Please raise your hand once you're done. Rifat, just waiting for you. Okay. Now, this is the integrated rate law expression. Okay, you can lower your hand. Integrated rate law expression for zero order reaction. Integrated rate law expression for zero order reaction. Now let's look at some graph. Okay, so for this, the first graph that you will see is between rate versus concentration of reactant. ठीक है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पे रेट है, बताइए. Do we have rate here anywhere? Tell me. Can you see rate term here? कहीं पे rate दिख रहा है आपको? Yes or no? Tell me. जोर से बोलिए जो भी बोल रहे हैं. Can you see Yes. rate here? नवाल, नवाल tell me. नवाल आपका तो बोलना पड़ता है, आप माइक ऑन ही नहीं करते हैं. Yes नवाल. Yes, sir. रेट है यहाँ पे. Yes, sir. कहाँ है रेट बताइए जरा, कौन सा टर्म है रेट? वी हैव 1 2 3 and 4. कौन सा टर्म रेट बता रहा है आपको? हाँ, यस नवाल, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन. आप तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोलते? हाँ नवाल बोलिए. 3. थर्ड टर्म, ये तो रेट कांस्टेंट है ना, के. Yes, sir. तो हमने क्या पूछा आपसे? रेट ना पूछ रहे हैं. व्हाट रेट कहाँ पे है? रेट कांस्टेंट और रेट में आपको फर्क नहीं पता? यू थिंक बोथ आर सेम? नवाल प्लीज No, कीप योर no, माइक sir. ऑन व्हेन आई एम टॉकिंग. हाँ बोलिए अब. इज देयर एनीवेयर रेट हियर? No, sir. हाँ ठीक है. रेट कांस्टेंट और रेट में फर्क पता है आपको? Yes, sir. ठीक है. Now, rate versus the concentration of reactant. So for this, you have the equation rate is equal to K into the concentration of A to the power 0. Okay. Now we can see that rate is equal to what? Just K. That means it is not dependent on the concentration at all. And hence the graph will look something like this. We'll write here the concentration of A. We can write here rate. And the graph will be parallel to x-axis. That means no matter whether the concentration of A is how much, the rate of reaction is going to be same only. Okay, the rate of reaction is going to be same. It doesn't matter whether you are increasing the concentration of A or not increasing the concentration of A, the rate is going to be a constant. Okay, now there is another graph, the second graph. The second graph is between concentration of reactant versus time. Okay, concentration of reactant versus time. Now here you can see that here we have the concentration of the reactant. Please see,
A naught तो constant है. We have this A, which is the concentration of reactant at different times. Okay, this is going to change. So we have the expression as A naught minus A. इसको ऐसे लिखते हैं. A naught minus A is equal to KT. Okay, I'm just rearranging this and I'm writing it as, I will put this A here and it will become A is equal to, okay, A has gone that side, so KT will come this side and it will become A naught, और अगर ऐसे लिख दें अगर हम तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, minus KT plus A naught. Okay, I hope there is no difference and you can see that there is no difference here. Now this is what my Y is equal to minus K. This is my M. This is my X. This is my C. Y is equal to mx plus c, right? Y is equal to mx plus c. And we can also see that the slope of this particular equation is negative. That is why it will have downward slope. Here we are going to write the t, the x that is equal to time, x-axis mein, and here we are going to write the concentration of A. And as you can see, the slope is what? Downward like this. Okay, a linear graph. Okay, as the time increases, the concentration of reactant is decreasing. This point here in the plot, it is what? It is the initial. When the time is equal to 0, the concentration of A is equal to what? It is equal to A naught. Okay, so this represents, what is the C? C represents the A naught. Write this graph also. लिख लिया आप लोगों ने ये सुनो प्लीज टेल मी. Nawal and Rifat. Yes, sir. Done. Okay, very good. Now write some examples of zero order reactions. Write number 1. Decomposition of gas. Decomposition of gas on solid surface at high temperature, sorry, at high pressure. Okay, now the reaction that is of ammonia, it is getting dissociated. We have platinum solid as the surface, and here we get N2 gas plus 2 moles of H2 gas. Sorry, I think 3 moles of H2 gas will be there. And we get 3 moles of H2 gas. Okay, so for this, rate is equal to NH3 to the power 0. Write another example. Now these examples I am writing because if you see this type of question in which we have platinum solid now, then you should understand that is what? Zero order reaction. Photochemical reaction. For example, we have H2 plus Cl2 in the presence of UV rays. They react and they are going to form 2 moles of HCl. Now this reaction depends on the UV rays. If you're hitting more UV rays, then it will give you more product.
or rather we can say the faster product will be formed, not more product, but faster product will be formed. H2 to the power 0 and chlorine to the power 0. आपने लिख लिया इसको? Yes, sir. Okay. Now write the second first order reaction. ठीक है? Second part. First order reaction. In this, rate depends on the first power of the concentration term of reactant. Okay, concentration term of the reactant. Here we have A, which is giving us a product P. In this case, rate will be equal to the rate constant K into the concentration of A to the power of 1. Okay, to the power of 1. And we know that this is what? For this, we don't need any experiment. We can monitor the reaction and we can get minus dA upon dt. This is going to be the same for all of the cases. Okay, this is not going to be different. And now we are going to equate both of these things. So I'm going to write minus dA upon dt. It is equal to K into the concentration of A. Now again, same things. We will keep the A part one side and the D part one side. Okay. So we have two variables. Okay. Concentration is going to change with time. We have two variables और इसी को क्या करते हैं? Separate करते हैं. So we will get minus dA upon A is equal to K dt. Now we are going to integrate on both sides. So we have integration of 1 upon A into dA. Okay, and the minus sign is there as it is. And here we are going to get K into the integration of dt. K into the integration of dt. Okay. Also, अब ये शायद आप लोग को नहीं पता हो, लेकिन integration of 1 upon x dx is equal to what? पता है क्या? Tell me guys. Any idea? No idea. Any idea? No idea. No. No idea. अच्छा, एक सेकंड. ये पता है आप लोग को? What is the differentiation of ln x? ये पता है आप लोगों को? ये भी नहीं पता. No, sir. No पता. Sir, हाँ, differentiation of 1 by x is log modulus x, no? नहीं, ये आपने उल्टा बोल दिया. Integration of 1 upon x is ln x, है ना? And differentiation of ln x is 1 upon x. Okay, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? This will be what? ln of a is equal to kt, और c मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है? Please remember what is c. kt plus c. Got it? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, yes, sir. Got the constant? Okay, now c. Now what? How will you determine c? At time is equal to 0. The concentration of A is equal to A naught. Concentration of A is equal to what? It is equal to A naught. Okay. And now what we are going to do? We are going to write ln of A naught is equal to kt, K into 0 plus C. Similarly, I can write C is equal to what? It is nothing but ln into the concentration of A at time is equal to 0. इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, yes, sir. ठीक है, अब देखिए. Now we can write this complete equation as
एक second, this will be minus sign will be there, no? Sorry. Minus sign will be as it is. ऊपर दिया था, हाँ ऊपर है minus sign, ठीक है? Okay. Now substitute C, value of C on equation 2. ये हमारा equation 2 हो गया. नहीं, this is my equation 2. Okay. So this will be equal to what? ये आपके बराबर हो जाएगा minus of ln A is equal to KT is equal to KT minus ln of A naught. तो ln of A naught को उधर ले जाते हैं, so you'll get ln of A naught minus ln of A is equal to KT. कोई दिक्कत यहाँ तक SNOPCL में guys? Any problem till here? No, sir. Oh, sir. All of you know log of A minus log of B is equal to log of A upon B. पता है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, very good. So it will be ln of A naught upon A is equal to KT. ठीक है, अब दूसरी चीज log of, now log, whenever I write log, it is of base 10. Okay, log of A, it is equal to 2.303 into ln of A. What is the difference between log and ln? Ln of A is what? It is log with base of exponential A. Okay, but when I write just log, then it is what? 10. When I write ln, it is natural log with a base of what? Exponential E. E वाला part होता है. Okay, E exponential part E. So ln of A naught upon A, इसको अगर हमको log में convert करना है, oh sorry, wait a second, this is उल्टा, my bad. 2.303 of log A, it is equal to ln of A. So if I have to convert ln of A into log, अच्छा, we always use log of base 10 because we can, we have the values, we have learned the values for 10 only. Okay, so we write it as 2.303 log of A naught upon A is equal to KT. ठीक है? So this is the equation that you have to remember. Okay, this is the equation that you have to remember. Two point three zero three A naught upon A is equal to KT. अच्छा, ऊपर का लिखा है क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा है क्या? Do I need to scroll up? Please let me know. Raise your hand when you are done.
चलिए, right next the graphs. Okay, you can lower your hand, guys. Please lower your hand. Graph for first order kinetics or first order reaction. Okay, so the first graph that we are going to make is between what? Rate and the concentration of reactant. Rate versus concentration of reactant. Okay, now for this, so what is the equation we are going to use? We are going to use the rate law expression, right? Rate law expression क्या था हमारे पास? Rate is equal to K into the concentration of A, the power 1. That means it is what? It is something like y is equal to mx. अच्छा, आप लोगों को ग्राफ वगैरह के बारे में थोड़ा सा ही पता है? नवाल एंड रिफत, यस और नो, टेल मी. ये y is equal to mx का ग्राफ कैसे बनेगा? नवाल एंड रिफत, टेल मी. No, sir. नहीं पता है आप लोग को? अरे हाय हाय, फिजिक्स आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? बिना ग्राफ के पढ़ रहे हैं क्या फिजिक्स? देखिए, एक छोटी सी किताब है, ठीक है ना? You don't have to read much pages about it, but just a second. आप लोगों ने खुद से भी नहीं सोचा? खुद सोच के बताइए कैसा बनेगा इसका ग्राफ? y is equal to mx का, m यहाँ पे आपका स्लोप है. क्या ख्याल है आप लोगों का, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? नहीं. Tell me what happened. ये देखिए, हम आपको ना एक छोटा सा तरीका बताते हैं, आप उससे किसी भी ग्राफ का एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है, प्लीज लिसन केयरफुली. ओके, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले तो आप इस तरह से बनाएंगे, सही है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. करेक्ट नवाल एंड रिफत, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. चलिए ठीक है, दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना? y इज इक्वल टू एम एक्स. जब भी आप लिखिएगा, आपने फंक्शन को देखा है इससे? फंक्शन कैसे लिखते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, है ना? देखा आपने, नहीं देखा आपने? नवाल एंड रिफत, Yes, टेल मी. sir. देखा Yes, आपने, है ना? तो इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, whenever we write this type of equation, हम लोगों को क्या लगता है ना, जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा उतना और जो लोग थोड़ा ध्यान नहीं रखते, उनको क्या लगता है कि अगर x को चेंज करेंगे तो y चेंज हो जाएगा और y को चेंज करेंगे तो x चेंज हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है. ऐसा दिखने में लग रहा होगा आपको कि y को चेंज करेंगे तो x चेंज होना चाहिए, ठीक है? लेकिन whatever we write in the y axis, it is what? It is the independent variable. क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे बताइए आप, हम रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं क्या? बताइए तो.
क्या रेट को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? रेट को बढ़ाया और घटाया जा सकता है सिर्फ कब? जब तक आप कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करें तब तक रेट बढ़ेगा घटेगा नहीं, है ना। लेकिन आप रेट के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ सीधा कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, है ना। कंसंट्रेशन को बढ़ाया आपने, रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। दैट मीन्स रेट इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट। बात समझ में आ रही है आपको? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. Yes. ठीक है, तो y इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि x पे आपका डिपेंड करेगा y की वैल्यू क्या होने वाली है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0। तो y कितना हो जाएगा बताइए? x की वैल्यू को 0 रखिए, कितना हो जाएगा y? x की वैल्यू को 0 रखिए, y विल बी इक्वल टू हाउ मच? Zero. 0। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। x को रख दीजिए इन्फिनिटी, y क्या हो जाएगा? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट मतलब आपका, देखिए जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ जस्ट इमेजिन अ वैल्यू ऑफ m। m की कोई वैल्यू बताइए क्या होगी? कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं m की। बहुत सिंपल रखने के लिए क्या रखिएगा? m की वैल्यू आप 1 रख लीजिए। ठीक है, क्या रख लीजिए m की वैल्यू? टेल मी। 1. 1। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए, थोड़ा सा प्लॉट बना लीजिए इस तरह से। यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू। x की वैल्यू जब 0, y की वैल्यू 0, ये आपको पता ही है, हमने देख लिया। ठीक है, सबसे पहले आपका काम यही है, x को आप 0 रखिए, x को इन्फिनिटी रखिए, फिर उसके बाद आपको एक अप्रोच पता चल जाएगा कि इस तरह का कोई ग्राफ बनने वाला है। y की वैल्यू जो इन्फिनिटी होगी यहाँ पे कहीं पे होगी, है ना। अब x की वैल्यू को अगर हम 1 रखेंगे, m हमारे पास 1 है, y की वैल्यू 1, x को अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2। ठीक है, तो यानी कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह से पास हो, इस तरह से बनेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। अब ये डिपेंड करेगा आपका कि ये जो आपके पास जो प्लॉट बना है ना आपका, ये इसका स्लोप क्या है। सिर्फ स्लोप पे फर्क आएगा। देखिए, ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, राइट। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, बट यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? सिर्फ m की वैल्यू चेंज हो रही है। इफ यू वांट टू सी अ बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस, जस्ट वेट अ सेकंड। वेयर इज द ग्राफ? Yeah, Desmos is something that you should see. Can you see this? ठीक है, ये आपको दिख रहा है? हम लोग बस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले स्लोप को दिख। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, आप तो शांत क्यों हो Yes, जाते sir. हैं? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, m की वैल्यू को जैसे बढ़ाइए, स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है ना। अब देखिए नेगेटिव स्लोप हो गया। ठीक है, नेगेटिव तरफ चला गया, इसको छोड़ दीजिए आप, हम लोग पॉजिटिव में ही रहते हैं। सी व्हाट इज ओनली हैपनिंग, ओनली द स्लोप इज चेंजिंग। ठीक है, Yes. दिस इज फॉर y इज इक्वल टू mx, है ना। अभी सिर्फ आप ना और भी ये कर सकते हैं, ये आप इसको ना ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, desmos.com है। जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा है क्या है, y इज इक्वल टू mx plus c, right? We'll add a slider for c and or also add a slider for अब इतना हमको नहीं आता ये, चलो ठीक है। देखिए c की वैल्यू अगर चेंज होगी सिर्फ, ठीक है, तो ये क्या चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप? कैन यू सी? Yes, sir. इंटरसेप्ट पता है क्या होता है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज वेयर इज दिस लाइन क्रॉसिंग द y एक्सिस। सी, इट इज क्रॉसिंग द y एक्सिस एट 7.27। यहाँ पे अगर हम पॉइंट रखेंगे, देखिए 0.0 है आपका x में, y में 7.27। ओके, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, जब c 0 हो जाएगा तो ओरिजिन पे आ जाएगा ग्राफ, देखिएगा 0 0 0, यहाँ सी इट इज 0। ओके, जब यहाँ पे आपके पास, इसको हम कट कर देते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपके पास m का भी स्लाइडर है, यानी स्लोप भी चेंज हो रहा है आपका। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड यू कैन प्ले विद अदर थिंग्स आल्सो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक होता है y इज इक्वल टू
m x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बनेगा। और जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका वही सेम थिंग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सो व्हेन इट इज 0 इज वेरी स्मॉल, ठीक है, धीरे धीरे आपका ग्राफ बड़ा होता जा रहा है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m, बहुत जल्दी ये ग्राफ इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट ग्राफ्स। लेट मी गो बैक। सो यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज योर y, दिस इज योर m, दिस इज योर x, y is equal to mx. Now this is going to be passing through the origin. So this is your y, y आपके पास क्या है, rate, and this is your concentration of A, and it is going to pass through the origin, ठीक है। ऐसे बस इसको ग्राफ को बना दीजिए, एंड यहाँ पे आप इससे डिटेल लिख दीजिए दैट स्लोप इज इक्वल टू, क्या है स्लोप आपका, k, ओके, स्लोप इज गोइंग टू बी k, ठीक है। ग्राफ बनाइए, जल्दी बनाइए जरा, सेकंड हम लोग देखेंगे हम। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में फर्स्ट इज व्हाट इज द इक्वेशन, first is what is the equation that we are going to use, okay. So we are going to use the equation that is log of a naught minus log of a is equal to kp upon 2.303। आपको लग रहा होगा सर ये इक्वेशन कहाँ से आया, हम लोगों ने ये इक्वेशन पुराना वाला ही इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया है और 2.303 को इधर ले आया है, बस नथिंग डिफरेंट हियर, ओके। ऑल ऑफ यू आप लोगों ने बना लिया ना ये ग्राफ, यस और नो, टेल मी। Yes. Yes. ओके फाइन। यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वाला ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। और इज द कंसंट्रेशन टर्म, दिस इज योर कंसंट्रेशन टर्म, ओके। इसको हम लोग को कहाँ रखना है, y पे रखना है, और टाइम पे ये कैसे डिपेंड करता है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट इट एज y, सो log ऑफ a is equal to, now this has gone here, so this will be log of a naught minus k upon 2.303 into time। टाइम को अलग से क्यों लिखा, बिकॉज टाइम इज माई x, so this part is y is equal to, this part is m, m के साथ हमेशा x रहेगा, ओके, mx, and this is my c, ओके। सो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, y is equal to mx plus c वाला ग्राफ बनेगा। फिजिक्स में तो ग्राफ होगा है ना, हाँ टेल मी। Yes. तो फिर फिजिक्स में आप लोगों ने कैसे पढ़ा बिना ग्राफ के, उसमें तो काफी ग्राफ्स होंगे। यहाँ पे आपके पास होगा log ऑफ a, यहाँ पे होगा आपके पास टाइम, and in this case my slope is what, negative slope है आपका, है ना, minus k upon 2.303, and it is c is what, a naught, c आपका a naught है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा इस तरह से, ओके। नाउ दिस इज माय log of a naught, what is the slope, slope is equal to negative k upon 2.303। लिख लिया आप लोगों ने, ये सुनो प्लीज सुनी। Yes, sir. Write the third one। We are going to plot between log of a naught upon a versus time, okay। Now we have this equation that is log of a naught upon a is equal to k upon 2.303 into time। Oops, sorry। What will be the plot, देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास ये क्या है, this is my y, this is my m, this is my x, okay। So how will be the plot,
बताइए प्लॉट कैसा होगा, इंटरसेप्ट वाला होगा या विद ओरिजिन से पास करेगा, बताइए। y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, है ना। कुछ इस तरह से, दिस इज माय टाइम एंड हियर वी हैव log ऑफ a नॉट अपॉन a, ठीक है, log ऑफ a नॉट अपॉन a, दिस इज माय 0. What is the slope here? Positive k upon 2.303. Happy? And then we are going to do problems on this in the next class. ठीक है, कल आप लोग का problems होगा इसमें. रिफत, आपको नोट्स और ये सब मिल गया? ग्रुप में हमने भेजा था ना सर, लिंक मिला। अच्छा, सिर्फ लिंक भेजा है ना हमने ग्रुप में, ठीक है, एक सेकंड. I have to send the highlighted PDF and the notes, है ना, भेज दे रहे हैं. Okay, I have sent both the things, ठीक है, highlighted PDF और ये भी क्या बोलते हैं उसको, नोट्स, राइट है सर. यस सर, Got it?